पहली न्यूज़ है focus on restoring the trust, says Army Chief, a day after India announced reaching on the agreement with China on patrolling and disengagement in eastern Ladakh. Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi sounded a cautionary note on Tuesday, stressing they were trying to restore trust and treasure each other. And once that was done, other stages, disengagement, de-escalation, and normal management of the line of actual control would follow. तो सीधी बात है उसकी बात कर रहे हैं. As far as we concerned, we want to go back to status quo of April 2020, he said. Thereafter, we will be looking at the disengagement, de-escalation and normal management of LAC. The normal management of LAC will not stop there. There is a phase in that also. तो सीधी बात उसी की बात कर रहे हैं कि इंडिया चाइना का जो अभी भी बात हुई है कि इसके बाद अब हम वापस से नॉर्मल पे आ जाएंगे. फिर मोदी मीट्स पुतिन ऑफर्स ऑल हेल्प to end conflict. So India support restoration of peace between Ukraine and Russia and committed to providing all possible assistance to end the crisis, Prime Minister Narendra Modi said on Tuesday during the bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin. ठीक है? Mr. Modi took part in meeting soon after the reaching Kazan, where the Russia is hosting 16th BRICS summit against the backdrop of the conflict in Gaza Strip and the Ukraine. ठीक है तो सोल्व भी हो रही है ठीक है फिर यहाँ पे क्या है ये सब तो ठीक है अब यही है Kazan में Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping will hold bilateral meeting on sideline of ongoing BRICS summit on Russia city of Kazan on Wednesday. Foreign Secretary Vikram Misri said on Tuesday. तो इनकी भी मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और सी जिनपिंग की ठीक है तो ये अपन को याद रखना है फिर एक न्यूज़ है ये IMF retains India's growth projection at 7 for financial year 25. So IMF maintained its June growth rate project for India in its latest World Economic Outlook released on Tuesday to kick off the World Bank and IMF annual meeting in Washington. ठीक है The multilateral lender expected India to grow at 7% in current fiscal year ending March 31st and 6.5 in the next fiscal year. World output was expected to grow at 3.2 in 2024 as well as 2025. The drop in India's growth from 8.2 in 2023 is because the pent-up demand accumulated during the pandemic has been exhausted as the economy reconnect with its potential and potential, the report said. The US is projected to grow at 2.8 this year and 2.2 next year, an upward revision from July WEO update. तो सीधी बात है ये इंडिया को कह रहा है कि इंडिया है ना 7 के आसपास ग्रो करेगा और वैसे 2025 के लिए तो ये भाई 8.2 तक पहुंचा रहा है तो ये है पर छोड़ो अब अपन को तो कोई याद रखने नहीं है सॉरी मैं क्या बोल गया 2025 तक नहीं ये क्या बोल रहा है ग्रोथ डी एक्सेलरेट तो डी एक्सेलरेट में क्या है डिसलेरेट में कि द चार्ट शोन इंडियाज ग्रोथ रेट इन 2023 इज प्रोजेक्टेड तो 2023 में देखो 8.2 बता रहा है 2024 में 7 बता रहा है 25 में कितना जाएगा 6.5 तो धीरे धीरे कम हो रही है सीधी बात ये है एक न्यूज़ है ऑन सेक्शन 6 ऑफ सिटीजन एक्ट सिटीजनशिप एक्ट का जो सेक्शन है उसके बारे में तो सेक्शन 6A originate from the Assam Accord, a political settlement signed on August 15, 1985 between Rajiv Gandhi-led Congress government and Assam's student group. Following 6-year-long agitation against the influx of undocumented migrants from Bangladesh into Assam, it established a framework for granting a
granting or denying Indian citizenship to migrant in Assam based on the cut-off date March 25, 1971. Both Justice Kant and Chandrachud upheld the differentiated treatment of Assam under Section 6A, citing the region's unique historical and political consideration. In sharply reasoned dissent, Justice Pardiwala declared Section 6A unconstitutional, effective only from the date of the judgment. तो उसने तो क्या कर दिया पार्टी वाला, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। अब अपने इतने ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, ये सब है ना, मतलब इंटरेस्टिंग लगती है पर आती नहीं अपने एग्जाम में। एक न्यूज़ है, वाई बिग टेक कंपनीज सच एज गूगल स्काउटिंग फॉर न्यूक्लियर पावर। So on October 14, Google announced that first corporate agreement to buy nuclear energy from multiple small modular reactor SMR. These SMR will be developed by Cairo Power. The initial phase of the work will bring up the first SMR by 2030, and subsequent deployment will continue through 2035 per Google. Per Google, this deal will provide 500 megawatt of carbon-free power to US electricity grid. They said this agreement will help in development of AI technologies to power scientific advancement. तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ना वो बना रहे हैं ये। तो अगला इसमें कि why nuclear energy? The training AI models, ensuring that they remains always online, maintaining growing data center are energy hungry tasks. In 2024 environmental report, Google admitted that its total global greenhouse gas emission rose up by 13% in 2023 year over year, pointing to the challenge of reducing emission while compute intensity increases and we grow our technical infrastructure investment to support AI transition. Google has held the nuclear energy is clean available around the globe, unlike solar energy and the carbon free. In the vein, the search giant see the next generation nuclear reactor as a way to power global data center and its offices with the help of clean energy. Small size and modular design further help the tech giant in faster deployment cycle. तो सीधी बात है, जो एआई के अपने मॉडल्स हैं और जितने भी ऑनलाइन काम हो रहा है इनके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए इनको बिजली चाहिए, तो उससे क्या है ना, ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं इतनी ज़्यादा बिजली बनाने के लिए। तो अब कह रहे हैं कि हम इनको स्वच्छ एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो कैसे मिलेगी? न्यूक्लियर एनर्जी से। तो कह रहे हैं कि वो बनाएंगे। अब उसमें भी अगर बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे बना रहे हैं ये लोग। तो बस वही टाइम वही कर रहे हैं ये लोग। तो इसलिए अपन को तो याद रखना है, गूगल ने अभी एक एसएमआर के लिए डील कर लिया फाइनल। इंडियाज फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च विद एडवांस आर्म्स। ठीक है, तो India's fourth nuclear-powered ballistic missile submarine, referred to S-4, was launched into water at the Shipbuilding Center in Visakhapatnam last week. Official source confirmed. This submarine is bigger and more capable than the first, INS Ariant S-2. The S-4 was launched into water on October 16 at SBC. Multiple sources confirm it has significant indigenous content, with Indian industry being extensively involved, according to source. India currently has two SSBN operational. INS Ariant was quietly commissioned into service on August 16, and the second SSBN INS Arigat S3 was commissioned August. The third SSBN Arithman S4 is currently undergoing sea trial and is expected to commission into service next year. तो कौन कौन सी हैं देखो, एक तो है अपनी INS अरियंत है, वो तो S2 हो गई। INS अरिगात हो गई, वो S3 हो गई। और एक है अपनी INS
अरिधमान, ये S4 होगी जो करंटली अभी काम कर रहे हैं. INS Arihant is presently armed with 750 kilometer range and K-15 SLBM. S4 carries advanced कितना 3500 kilometer range SLBM K4 that was tested for the first time in 2020. K4 will be the mainstay of India's undersea deterrence as it provides stand-off capability to launch nuclear weapon while submerged in Indian water till a 5,000 kilometer range. SLBM is developed and fielded. तो सीधी बात ये है. तो ये एस एल जो फोर होगी ना, SLBM 4, तो इसकी तो भाई रेंज खतरनाक ही होने वाली है. और जो अपनी INS अरिहंत है उसकी तो रेंज सिर्फ 750 किलोमीटर ही है. पर S4 की तो बहुत ज़्यादा है, 3,500 से स्टार्ट 5,000 तक चल जाएगी. अब एक बात करिए, इंडिया एंड सिंगापुर टू एक्सप्लोर जॉइंट डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट for armed forces. So India and Singapore on Tuesday agreed to extend the existing bilateral agreement on joint military training army for the next 5 years and also look at co-development and co-production of defense equipment. This decided during the sixth India-Singapore Defense Ministerial Dialogue in New Delhi, co-chaired by Defense Minister Rajnath Singh and visiting Singaporean counterpart NG Enghen. तो सीधी बात है, इन्होंने वापस से उसको बढ़ाने की बात की है. और आगे क्या है, दिस मीटिंग अज्यूम सिग्निफिकेंट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडियाज मार्किंग अ डिकेड ऑफ इट्स एक्ट ईस्ट policy act East Asia policy in which Singapore has played a key role in the promoting economic cooperation and cultural ties and the developing strategic connectivity with countries in the region. It said the two countries were two countries elevated their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership recently during the visit of Prime Minister Narendra Modi to the city name. ठीक है, तो सीधी बात है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और किस लिए इम्पोर्टेंट है? जो अपने एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी है उसके लिए. तो ये है कि over 50 killed in 2 days activities of Sudan. तो 50 kill, sorry, over 50 killed in 2 days of Sudan battle. Local activists in the central Sudan have reported over 50 killed since clashes erupt in Al Jazeera state on Sunday after a paramilitary commander defected to army. The war has raged between the Sudanese armed forces and paramilitary rapid support force since April 2023, killing tens of thousands of people, creating world's largest displacement and humanitarian crisis. The two forces are currently locked in brutal combat over the Central Sudan's agriculture अल जजीरा स्टेट. तो सीधी बात है, वहाँ पे जो पैरामिलिट्री है और आर्मी है उनके बीच में लड़ाइयाँ हो गई हैं. सिंपल सी बात तो ये है.